Hello dear students of first year. Once again you are welcome in this online session of classes. So as we are doing unit number 4, which is analytical geometry, and in this we are doing topic straight lines. In the previous video we have studied about the slope of a line joining two points by two methods, by two formulas. First one was m equals to tan theta and second one was m equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay. Now we will be doing the next topic or the next article which is in this chapter straight lines, that is angle between two lines. That is angle between two lines. So angle between two lines is evaluated by tan theta is equals to m2 minus m1 upon 1 plus m1 into m2. Tan theta is equals to m2 minus m1 upon 1 plus m1 into m2. Now, what is this theta? For example, let us say these are the two lines in between whose we have to find out the angle, जिनके बीच में हम दोनों लाइंस बीच में एंगल फाइंड करना है. ठीक है, these are the two lines. Now let us say this is the angle in between those two lines, and if we are to find out this angle, then what thing is needed to us, or what thing should be given to us, that is the slope of the two lines must be given to us, that is m1 equals to the slope of first line and m2 will be the slope of second line. If these two slopes are given to us, then very easily we can find out the angle between two lines by using this formula m2 minus m1 upon 1 plus m1 into m2. Now one more thing, let's see. In between these two lines, the angles can be in two ways. Either this can be theta, or we can also say this angle can also be there, which we used to generally denote by phi. ठीक है, दो लाइंस के बीच में एंगल दोनों तरीके से हो सकता है. ये वाला एंगल भी हो सकता है, ये वाला एंगल भी हो सकता है. ठीक है, तो इस एंगल से जो हम लोग फाइंड करते हैं थीटा, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? सर सी, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. ये कितना है? स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल कंप्लीट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री. तो अगर ये कंप्लीट एंगल 180 डिग्री है, and let us say in our question theta comes 30 degree, तो ये कितना हो जाएगा? रिमेनिंग 150 डिग्री. 180 डिग्री minus 180 degree minus 30 degree will be equals to 150 degree. This type of question we will do later on. First of all, this is the angle between the two lines. This is the formula of angle between the two lines, that is tan theta is equals to m2 minus m1 upon 1 plus m1 into m2. Afterwards, the next topic will be to find out the equation of a line. Next topic will be to find out the equation of a line. Next topic is equation of a line. Now there are five different forms to identify or to state or to write down to specify the equation of a line. ठीक है, हम लोग कैसे डिनोट करते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन को? फॉर दैट वी आर हैविंग 5 डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक है, द वेरी फर्स्ट फॉर्म इज पॉइंट स्लोप फॉर्म. पॉइंट स्लोप फॉर्म. पॉइंट स्लोप. Now see students, from the name itself it is clear that it is point slope form. That means if we have to find out the equation of a line, ठीक है, अगर हमें किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें उस लाइन का एक पॉइंट गिवन होना चाहिए और एक स्लोप गिवन होना चाहिए. ठीक है, स्लोप तो एक ही होगा बिकॉज ऑफ दैट वेरी सेम लाइन. इफ वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, व्हाट वी शुड बी गिवन, what we must be given one point of that line and the slope of that line should be given to us. ठीक है, if we have to use point slope form, if these two things are given, then we can use point slope form to find out the equation of a line, that is y minus y naught is equals to m into x minus x naught. Y minus y naught is equals to m into x minus x naught, where m is the slope of the line and x naught, y naught is the coordinate of the point of the given point. Sir, it is the coordinates of the given point. Let me give an example. I'm speaking with an example that find the equation of a line
find the equation of a line having slope 2. Let us say having slope 2 and passing through a point 3, 4. ये क्वेश्चन आपके पास, ठीक है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप इक्वल्स टू 2 एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट 3, 4. तो आपको स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है. तो अगर पॉइंट और स्लोप गिवन है तो कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है. और जो गिवन पॉइंट होता है दैट इज नॉट x, y, वो क्या होता है? x0, y, ठीक है. जो गिवन आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ गिवन पॉइंट है, दोस आर x0, y0. सारी वैल्यूज पुट कर दो, आपकी इक्वेशन आ जाएगी. पुट कर दीजिए. y minus 4 is equals to m कितना है? 2 into x minus x0 कितना है? 3. We can solve it. 2x minus 6, ठीक है. You can transpose your elements to the left and right hand side. So your required equation will be 2x. y की जगह क्या हो जाएगा? minus 6 is already there. minus 4 की जगह क्या हो जाएगा? plus 4. So minus 6 plus 4 will be equals to 0, or we can say 2x minus 5 minus 2 is equals to 0. This is the required equation of a line, ठीक है, which is having the slope 2 and passing through a point 3, 4. This is the equation of a slope. Yeah. So after that, we will be studying various forms and we will just simultaneously do the example based on that form. Now the second form, okay. Now the second form is 2-point form. The second form is 2-point form. Second is 2-point form. Now from name itself, it is clear that 2 points of a given line should be given to us. That is, if the coordinates of any 2 points through which a line is passing is given to us, then we can find out the equation of a line using this form. So this form is y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. Okay. Since this form is just corollary, we can say, or is just one step ahead of this form only. इसमें हम लोगों ने सिर्फ क्या किया? m का फॉर्मूला पुट किया है. m का फॉर्मूला आप लोगों ने पिछले वीडियो में स्टडी किया था कि m is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. So very same formula we have substituted here and we have got the 2-point form. बस ये x0 y1 की जगह हम लोगों ने x1 y1 लिख दिया, ठीक है. That is very same thing. क्यों x1 y1 लिख रहे हैं? Because we are having 2 points. We are having 2 points. तो जो पहला पॉइंट होगा उसको x1, y1 से डिनोट कर दीजिए. सेकंड पॉइंट को x2, y2 से डिनोट कर दो. Let me give an example. Find the equation of a line passing through the point 1, 2 and 3, 4. इस तरह से इक्वेशन मान लें 1, 2 and 3, 4. तो जो पहला पॉइंट होगा आपका हो जाएगा x1, y1, ठीक है. और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? x2, y2. That means x1 is 1, y1 is 2, x2 is 3 and y2 is 4. Put all the values in this equation on this form, you will get the equation of the required line. Okay, let's come to the next form. The next form is slope intercept form. Slope intercept form. This is very important form. Slope intercept form, which is highlighted in your syllabus also for remedial mathematics. Slope intercept form of a straight line. So this is y is equals to mx plus c. Y is equals to mx plus c. स्टूडेंट्स, किसी भी इक्वेशन में ना आपके पास x और y की वैल्यूज गिवन नहीं होंगी, ठीक है. जो भी उसके अलावा जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज गिवन होंगी, क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है वो x और y की टर्म्स में ही आती है, ठीक है. द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द लास्ट विल कम इन द फॉर्म ऑफ x and y. सो यू हैव नॉट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x and y. You are just needed, or you are just required the value of m and c over here in this equation, which is slope intercept form. So if you have to use this slope intercept form, from name itself it's clear that one slope should be given to us and another is one intercept should be given to us, ठीक है. Now what's the meaning of intercept? See students, let us say this is a Cartesian plane. For example, if I am saying this is a point like
2 comma 0, 2 comma 0, then this point will be known as x-intercept. x-intercept equals to 2. ये जो पॉइंट आप इसको क्या कहेंगे, x-intercept 2. x-intercept का मतलब होता है एनी पॉइंट ऑन x-axis where y coordinate is 0. ठीक है, x-intercept वहाँ पे क्या जाएगा 2. x-intercept 2 कहने का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे y coordinate 0 है, 2, 0. अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए 0, 5, तो इसको आप कहेंगे y-intercept equals to 5. y-intercept equals to 5. ठीक है, so here m is the slope and c is y-intercept. ठीक है, इंटरसेप्ट दो होते हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट. तो लेकिन इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो c है, दिस इज y इंटरसेप्ट. अगर आपके पास x इंटरसेप्ट होगा तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकते बिकॉज हियर c इज y इंटरसेप्ट. ठीक है, एंड m इज स्लोप. सो नेक्स्ट फॉर्म, फोर्थ, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म. फोर्थ फॉर्म इज इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है, सो इंटरसेप्ट फॉर्म इज x upon a plus y upon b is equals to 1. x upon a plus y upon b is equals to 1. Okay, now what is a over and b over here? See, intercept form. Intercept doesn't mean that only one intercept is given to you, because if you have to find out the equation, then at least two variables should be given to you, then only you can find out the equation for line. So intercept form means both intercepts. ठीक है, दोनों intercepts आपको given होंगे, x intercept भी और y intercept भी. थर्ड फॉर्म क्या है? अगर आपको y intercept और slope given है, then you will use third form, slope intercept form. But if both the intercepts are given to you, slope is not given to you, both the intercepts are given to you, that is x intercept and y intercept, then you are going to use intercept form. And here a is the x-intercept and b is y-intercept. Don't interchange it. A is x-intercept and b is y-intercept. Okay. Then you can find out the equation of a line using intercept form. We will be doing some questions and examples of all these forms later on. First of all, let's study all these 5 forms. And the last one, fifth form is normal form. This is normal form. What is the normal form? Let's first of all explain it diagrammatically. This is cartesian plane x dash, y and y dash. Okay, this point is origin. Now let us say we have to find out the equation of this line. That is, we have denoted by L. ये जो L से हम लोगों ने denote की है line, the line which we have denoted by L, we have to find out the equation of this line L. Okay, so normal form आप लोग कब यूज करेंगे? If one normal or means normal में क्या होता है? Perpendicular. ठीक है, what is the meaning of normal? That is perpendicular. So if this perpendicular distance is given to you between the line and origin, ठीक है, origin से अगर इस line का आपको perpendicular distance given है, perpendicular word क्यों किया है? कहा गया बिकॉज दिस लाइन शुड बी, जो डिस्टेंस से परपेंडिकुलर होना चाहिए, इंक्लाइंड नहीं होना चाहिए किसी और एंगल पे, दिस शुड बी टोटली परपेंडिकुलर. अगर ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है जिसको हम p से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, p क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन. इफ यू आर राइटिंग, यू कैन राइट डाउन p is the perpendicular distance of the line from the origin. ठीक है, so if this p is given to you, and one more thing, this p that is normal making an angle omega with positive direction of x-axis. ठीक है, क्या चीज, दो चीजें गिवन होनी चाहिए इसमें आपको इस नॉर्मल फॉर्म में. एक तो लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होना चाहिए ओरिजिन से, और दूसरा वो परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल लाइन नहीं, ये जो नॉर्मल आप लोगों ने ड्रॉ किया था, ये नॉर्मल जो पॉजिटिव x-axis के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट इज ओमेगा. इफ दीस टू थिंग्स आर गिवन टू यू, again I'm repeating, p is the perpendicular distance of the line from the origin and omega is the angle made by the normal with the positive x-axis. If these two things are given to you, then you can find out the equation of a line using this normal form, and that is x cos omega plus y sin omega is equals to p. Is equals to p.
दो चीजें आ रही हैं यहाँ पे p और ओमेगा. So p is the perpendicular distance and omega is the angle made by the normal with the positive x-axis. Okay. And after that, before concluding the video, there is one very important topic. ठीक है? These are the forms by using these forms we can find out the equation of a line. But since आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने सबसे इस फर्स्ट फॉर्म में एक एग्जांपल किया था, उसमें हम लोगों ने जो लास्ट में जिस फॉर्म में आंसर छोड़ा था, ठीक है, या फिर आप लोगों ने जो 9th और 10th क्लास में आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ अ लाइन पढ़ी है, इफ यू जस्ट रिकॉल linear equation in two variables, please recall that chapter, linear equation in two variables, that you studied in 9th standard also and 10th standard also. So वहाँ पे आप लोगों ने linear equation, linear का मतलब होता है line, linear का मतलब होता है equation of a line, ठीक है ना जी, जिसकी डिग्री 1 होती है. So वहाँ पे आप लोगों ने जो linear equation पढ़ी थी, जनरल फॉर्म पढ़ी थी, that was ax plus by plus c is equals to 0. Please recall that. फिर जिसको देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि आप लोगों ने जरा ये कोई लाइन है ना, ठीक है, इसके आप लोगों ने प्लॉट करना है, ठीक है. 9th में आप लोगों ने पढ़ा, 10th में पढ़ा है, इस लाइन को आप लोगों ने ग्राफिकली प्लॉट करना है या फिर इसका सॉल्यूशन शो करना है. तो आप लोग कैसे करते थे? इसके पॉइंट्स निकालते थे, x को 0 पुट करके y को निकालते थे, और y की वैल्यू 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड करके या फिर कुछ और वैल्यूज पुट करके आप लोग दोनों 2 या 3 पॉइंट्स निकाल के लाइन का ग्राफ या फिर सॉल्यूशन प्लॉट करते थे, ठीक है, ग्राफ में. तो ये जो आपकी फॉर्म होती थी, ये कौन सी फॉर्म होती थी? जनरल फॉर्म. तो इसी को हम लोगों ने स्टडी करना है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन. इट इज जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन. जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, दैट इज ax plus by plus c is equals to 0. ax plus by plus c is equals to 0. This is the general equation of a line. ठीक है? So now in this topic, general equation of line, I have to tell one very important thing. If see, equation of a line can be given to you in general form also, in slope intercept form also, ठीक है? So you have to just see that. तो अगर आपको जनरल इक्वेशन गिवन है, जनरल इक्वेशन लेके पता, जैसे एग्जांपल बोल रहा हूँ, मान लीजिए 2x plus y minus 3 equals to 0. तो देखो ax plus by plus c equals to 0. प्लस माइनस नो प्रॉब्लम, ठीक है. यहाँ पे c की वैल्यू हो जाएगी -3. अगर आपके पास यहाँ बीच में प्लस साइन नहीं है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3. सो साफ देखने से पता चल जाएगा कि आपका इक्वेशन कौन सी फॉर्म गिवन है. सो इफ इट इज गिवन टू एज जनरल फॉर्म, सो इन दिस जनरल फॉर्म इफ द क्वेश्चन comes, what is the slope of a given line? For example, if question comes in 1 or 2 months, what is the slope of this given line? ठीक है. So in this, by this general equation, you can find out slope and which is minus a upon b. ठीक है. That means if equation of a line is given to you in general form and you are asked to find out the equation of a line, slope of that line, then slope of a line is distinguished or is evaluated by this formula minus a upon b. वैसे इस तरह किस एग्जांपल की बात करें कि ये लाइन गिवन है, बस तो आपको स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप क्या होता है? minus a upon b. अब फिर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं where a is coefficient of x, b is coefficient of y and c is constant term. A is coefficient of x, b is coefficient of y and c is constant term. So here minus a क्या है? x का coefficient, that is 2, and b is coefficient of y, that is यहाँ पे क्या है? 1. तो आपका स्लोप कितना हो जाएगा? -2. और मैंने बताया था कि स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है. नेगेटिव का मतलब है डिसेंडिंग स्लोप और पॉजिटिव का मतलब है असेंडिंग स्लोप, ठीक है. So thank you. In this video, we will be just stopping, or we will be concluding this video here only. In the next video, we will be doing some questions of all these various forms and also the angle between the two lines. So thank you and have a nice day.